Hi guys, welcome back to my channel, and in today's video I will be discussing all the brilliant, superb, fantastic hair products that I've been loving. I've been using these products for over I think 2 years now, or maybe more, I don't know. But I have been consistent with all these products. I've been loving them and I have seen great results, and I truly rely on these products. I trust them so much, and इतना trust कि पिछले 2-2.5 सालों से मैंने अपने hair के products change ही नहीं किए हैं. I've been using the same products. I love my hair care routine. I love what I've been using. I can see change. My hair feels nice. They're bouncy, soft and long. There is no hair fall and everything is going in the right direction. So why do mess it up, right? If I'm liking something, may as well just continue using it than just adding something new and messing everything up. But because I recommend, sometimes I do try and I do not like most of the things. So that's the story. So for me to add anything new into my hair care routine, it has to be really good because I have used the best products for my hair. So my hair type is dry. I have really dry ends and they're frizzy. They're like jhaadu. अब तो बहुत better हो गए हैं because I've been taking care of my hair. But earlier it was really bad. It was really bad. So I should stop touching my hair. Okay. So without any further ado, let's begin with the video. Let's start with hair oil first. I love a good hair oil and I like to champy at least once a week. अगर हफ्ते में 2 बार कर लूँ तो it's great, like it's the best, but usually नहीं हो पाता, it's very rare. बट हफ्ते में एक बार तो ज़रूर बाल चम्पी करने हैं. So for hair champy, I've been using this oil. This is from Indie Wild. It's their champy hair oil. Love this oil. I love the fragrance of it. I use this on my scalp and I massage it, keep it for 30 minutes and then wash it off. And this is not like chip wala tel, huh? This is very light. It is not a thick formulation. That's what I love about this. And with this I use this hair oil. Now this is not from any company. ये सिर्फ मैंने ऑयल एक खाली बॉटल में डाला हुआ है. ये हेयर ऑयल जो है ये मेरी मॉम ने बनाया है. आई डोंट नो द रेसिपी, बट इफ़ यू वांट टू नो कि ये कैसे बनाया, आई कैन आस्क हर एंड टेल यू द रेसिपी इन अनदर वीडियो. बट दिस इज़ वॉट शी हैज़ मेड. आई थिंक 2 इंग्रेडिएंट तो मुझे पता है, मेथी एंड करी पत्ता तो इसमें पक्का जाता है, बट उसके अलावा मुझे नहीं पता इसमें क्या क्या डाला हुआ है. बट दिस इज़ अमेजिंग फॉर हेयर फॉल एंड अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो गए हैं. सो दिस इज़ वेरी गुड. आई लव दिस. एंड मैंने ना ये ड्रॉपर बॉटल में डाल दिया है सो दैट इट्स जस्ट ईजी टू पुट द ऑयल, यू नो. वरना वो बॉटल से डालना मुझे बहुत कंटाल आता है, दिक्कत होती है, इट्स मैसी. सो इफ़ यू वांट टू नो द रेसिपी फॉर दिस, प्लीज़ कमेंट बिलो. हफ्ते में एक बार ये ज़रूर लगाती हूँ एंड आई स्विच बिटवीन दीज टू. एंड सम डेज आई लाइक टू पुट बोथ. इफ़ आई एम इन अ मूड एंड आई हैव लॉट ऑफ टाइम इन हैंड, मैं दोनों ऑयल लगा लेती हूँ. आई जस्ट मिक्स इट अप. सो दीज आर द 2 प्रोडक्ट्स आई रीच आउट टू. जब कभी भी मुझे बालों में तेल लगाना होता है एंड अच्छी चम्पी करनी होती है, मैं इन दोनों को यूज़ करती हूँ. नाउ हेयर चम्पी करने के बाद ऑब्वियसली आई वॉश माई हेयर एंड फॉर दैट आई हैव बीन लविंग दिस शैम्पू. मैं इतना ढूंढ रही हूँ ना इसका सब्सटीट्यूट एंड इसका कोई ड्यूप अगर मुझे मिल जाए इंडिया में, because this shampoo is not, unfortunately it's not available in India. So but I will still recommend because it's such a killer shampoo. It's such a great product. I'm talking about Briogeo. I have been recommending this shampoo ever since I've started using it. I love it so much, especially if you have damaged dry hair. This shampoo is super hydrating and moisturizing. This shampoo is called a super moisture shampoo. So if you have dry ends and dry hair, frizzy hair, jadu hair, this is such a brilliant shampoo. If you're traveling abroad, if you know anyone who can get this for you, it is such a killer product. I have used multiple bottles of this. This is one product that you will not regret buying. I'm still on a hunt to find a dupe for this. I keep searching for it. Search उस level तक जा चुकी है that I'm actually looking
at the ingredient list and I'm trying to match it, you know, with another shampoo. But it's not working. It's not working. All the products are failing in my opinion. If you have any recommendation, please you guys help your girly out here and please comment below. So comment में बताओ अगर आपके पास कोई अच्छा शैम्पू recommendation है जो हाइड्रेटिंग हो, ड्राई हेयर के लिए हो, थोड़ा मॉइस्चर दे, थोड़ा बाउंस दे. आई वुड लव टू नो दैट. जैसे मैं शैम्पू ट्राई कर रही हूँ ना, हेयर मास्क भी मैंने बहुत सारे ट्राई किए हैं लास्ट 2-3 मंथ में. बट जैसा शैम्पू का हाल है वैसा ही हेयर मास्क का हाल है मेरे साथ. हेयर मास्क भी कोई नया मेरे को ऐसे नहीं लगा दैट इसमें कुछ बात है, क्योंकि मुझे कोई बात लगी ही नहीं है. हेयर मास्क में भी मैं सारे डिफरेंट मास्क ट्राई कर लेती हूँ, लेकिन आई गो बैक टू दिस पर्टिकुलर मास्क and it never disappoints me. I am talking about this hair mask. This is from Plum. It's their Nourish Up hair mask. It has avocado and it smells amazing. It is so hydrating. I love this. So hair mask is supposed to be used after you shampoo your hair. But you know sometimes what I do, and it's a great tip. जब भी मेरे को बाल धोने होते हैं ना, and if I have like 20 minutes 15 minutes in hand before I go for the shower, मैं ये जो एंड्स है ना इसको थोड़ा सा पानी से गीला कर लेती हूँ एंड नहाने से पहले इसको अपने बालों पे लगा लेती हूँ इधर एंड इधर. And then I just leave it on for 10-15 minutes and then I go for shampoo and entire thing. So because I'm putting this mask for a longer period of time, तो इसका असर ना मुझे थोड़ा better लगता है. And जब इतना time नहीं होता, then I just put this after shampoo and 3-4 मिनट के लिए लगाती हूँ and then I wash it off. But this is now another product which I feel has changed my entire shower routine or hair care routine is this microfiber towel. You can easily get it from Amazon. So instead of using a normal towel, I use this and it just absorbs the water really well. So this is something I have been loving for over 2 years now. I have not used a normal regular towel on my hair. Nana, not happening. This is a magic product. So in my post shampoo routine, I love to put a nice leave-in conditioner. I feel this is another step, another very important step. Ever since I've started using a leave-in conditioner, मुझे मेरे बाल बहुत ज़्यादा soft, shiny and bouncy लगते हैं, दिखने में भी and feel करने में भी. So I love a leave-in conditioner and this is what I've been using. This is from Sol de Janeiro. It's their Milky leave-in conditioner. It is such a good one. It comes in a spray bottle, so you just spray this onto your hair or put it on your palm like that and then just rub it and apply it like that. And it is, first of all, yummy smell. It gives that extra moisture and shine जो आप बाल धोने के बाद चाहते हो कि आपके बाल ऐसे दिखें shiny and bouncy and all, you know, moisturized and not dry and dull. So this does the job. I love this leave-in conditioner. And how can I forget Olaplex? I love Olaplex also. I love a lot of their products, but I have one right here which I've been consistent with. This is Olaplex number 7 bonding oil. So ये जो bonding oil है ये सिर्फ मैं अपने बालों के ends में लगाती हूँ इधर. So just to give that extra hydration here, I use this product. So इन सब products के अलावा बहुत सारे ऐसे दिन भी होते हैं when I don't have the time to even use leave-in conditioner, Olaplex or anything. Just shampoo and serum and that's it. So उन दिनों में मैं क्या use करती हूँ? I use this. This is from L'Oreal. It's their extraordinary oil serum. And I just take few pumps of this, apply it on all over my hair and good to go. That's it. It's a quick fix and वो काफ़ी दिन ऐसे होते हैं believe me, because
हेयर केयर रूटीन करना फ्रॉम स्टार्ट टू एंड इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. ऑयल भी, शैम्पू, मास्क, लीव इन कंडीशनर, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. इतना टाइम मिलना बहुत रेयर होता है मेरे लिए. सो व्हाट आई डू इज़, कभी ऑयल लगा लिया तो शैम्पू के बाद सीधा सीरम लगा लिया. ये सारे प्रोडक्ट्स मैं टाइम के हिसाब से स्विच तो करती रहती हूँ, बट स्विच करने के अलावा ये चेंज नहीं हुए हैं अभी तक. सो आई हैव बीन लविंग माई हेयर केयर रूटीन एंड आई लव ईच प्रोडक्ट विच आई हैव शोन टुडे. I hope you like this video, and if you did, you know the drill. Like, share, comment and subscribe to my channel, and I will see you guys super soon in my next one. Bye.